Dear students, how are you all? Hope you have understood about resistance and resistivity. Today we are going to discuss a very interesting topic, and that is color code for carbon resistors. You might have seen this type of resistors in all the electric and electronic circuits. For example, आपके टीवी के रिमोट में या फिर आपके कंप्यूटर्स में you might have seen some integrated circuits, और उन integrated circuit में बहुत सारे elements में से एक element होता है ये resistance. Now the question is, how can you read the amount of resistance by just looking at it? You can see different colors on this carbon resistors. So today we are going to discuss how you can read the color code and find the amount of resistance. Now you can see in this diagram, यहाँ पे हमारे पास चार different colors की lines हैं. As shown in this diagram, जो first line है, it gives you the first significant figure. जो पहली लाइन है वो हमें पहली सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सेकेंड लाइन जो इस डायग्राम में ग्रीन है वो हमें बताती है सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में. जो थर्ड लाइन है जो इस पिक्चर में ऑरेंज है वो हमें बताती है मल्टीप्लायर के बारे में. और जो लास्ट लाइन है वो हमें बताती है टॉलरेंस के बारे में. जो लास्ट लाइन है टॉलरेंस वाली, समटाइम्स इट इज़ देयर एंड समटाइम्स देयर इज़ नो कलर, यानी किसी किसी रजिस्टर में पहली तीन लाइनें ही होंगी. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू रीड दीज सिग्निफिकेंट फिगर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल यू हैव गिवन अ कार्बन रजिस्टर हैविंग different colors of line. Now as I told earlier, first line gives the first significant figure. From this you can see that we have this chart जो हमें बताता है how to find the value of resistance. You can remember it as B.B. Roy in Great Britain had a very good wife wearing gold silver necklace. Wearing gold silver necklace. With the help of this mnemonic you can make this whole table. B.B. Roy यानी ये B, black, brown, red, orange, yellow, and then इनको छोड़ देंगे तो G stands for green, then you have blue, violet, grey and white. और tolerance के लिए gold, silver necklace. Wearing gold, silver necklace. Now for example you can see this picture. First line is red line, तो यहाँ पे हम देखेंगे red corresponds to 2, so you'll write 2. Second line corresponds to second significant figure, और यहाँ पे आ रहा है green, so we'll write 5. Now third line significant है multiplier, यानी थर्ड जो लाइन है वो हमें बताती है मल्टीप्लायर के बारे में. और यहाँ पे जो लाइन है वो है वायलेट, एज यू कैन सी. तो वायलेट जो है वो है 10⁻7 मल्टीप्लायर, यानी विल राइट 25 × 10⁻7. एंड लास्ट हमें बताता है टॉलरेंस के बारे में. नाउ इन दिस केस टॉलरेंस हमारे पास, मान लो ये लाइन जो है ये गोल्डन है, तो टॉलरेंस है ±5%, यानी ±5% जो है इसकी वैल्यू में एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी आगे पीछे, यानी इस वैल्यू से 5% कम भी हो सकती है, इस वैल्यू से 5% ज़्यादा भी हो सकती है. सो दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एज शोन बाय दिस कार्बन रेजिस्टर. नाउ गोल्ड सिल्वर नेकलेस में ये गोल्ड हो गया 5%, सिल्वर हो गया 10%, एंड एन स्टैंड्स फॉर नो कलर. अगर कोई कलर ना हो तो टॉलरेंस लिमिट जो है वो 20% हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड. Next we have combination of resistances. As you have done in your 10th class also, we have resistances in parallel and resistances in series, which are used for different purposes. So first we are going to discuss resistance in series. Series means when the resistances are connected one after the other. So we have one resistance, second resistance, third resistance, let it be R1, R2 and R3. Now one thing you keep in mind, when the resistances are connected in series, then the same current flows through all the resistances. So in this case current will be same and the value of potential will be different, yani V1, V2, V3. So what we'll find the total value of potential, which we can write it as V1
plus V2 plus V3, or you can write it as IRS. Yani we'll use Ohm's law to find the equivalent value of resistance, and you'll write it as IR1 plus IR2 plus IR3 and so on. I is common, so we are left with resistance in series is R1 plus R2 plus R3 and so on, which means if the resistance is on series, they are added algebraically. Then we have resistances in parallel. Now resistances in parallel means you have one resistance, other resistance, one more resistance which are connected parallelly. And from this diagram you can see, if you connect a battery having some value of EMF or voltage, the current will be divided. Suppose I is the current flowing, तो यहाँ आ जाएगा I1, I2 and I3. Now suppose this is resistance R1, R2 and R3. In this case, as you can see, the work done to move charge from A point to B point, since the electrostatic forces are conservative forces, that does not depend on the path. तो हम चाहे ये वाला पाथ फॉलो करें, चाहे ये वाला, जब तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, the work done will be same, which means in this case potential will be same. So you will remember that in case of parallel, potential हमेशा same रहेगा. So we need to find the value of current. So I is I1 plus I2 plus I3. Again using Ohm's law, what we'll get? We'll get V by Rp is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 and so on. Since V is common, so you'll write 1 by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on. Now one thing to keep in mind, that if you have resistance in series, अगर हमारे पास resistance series में है तो equivalent resistance की value always increases. For example, if you have two resistances 2 ohm and 2 ohm, if they are connected in series, you'll get the answer as 4 ohm. But if the same resistances are connected in parallel, अगर resistances parallel में हो, you'll get 1 by Rp as 1 by 2 plus 1 by 2 and you will get the answer as 1 ohm. So the effective resistance decreases when you have the resistances in parallel. Now for example, we have a question, find the resistance in this circuit, but you have to pay attention कि हमें resistance किसके across निकालनी है. इसलिए हमने इस question में दो cases लिए हैं. First case is find the resistance across AB, which means in this case जो external battery है वो AB के cross connected है. So you will draw like this, which means अगर हमें AB के cross resistance find करनी है तो जो भी current होगा, suppose the current is flowing from positive terminal, तो यहाँ पे जाके वो करंट डिवाइड हो जाएगा, यानी कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा और कुछ यहाँ चला जाएगा, which means that now how you have to remember that in series the same current flows and in parallel the current is divided. So as you can see, जो current AD में जा रहा है वही current DC में जा रहा है, which means that this 3 ohm resistance and 7 ohm resistance are in series. So in this case, इस केस में हमारे पास 7 plus 3 यानी 7 ohm plus 3 ohm resistance कितनी आ जाएगी? 10 ohm. Now 10 ohm जो होगी यानी वो resistance जो है again वो किसके parallel होगी? इस 10 ohm के. So you will write in the next step 1 plus 10 plus 1 by 10 plus 1 by 10. What you will get? You will get the answer as 5 ohm. यानी 1 by Rp जो होगा सॉल्व करने के बाद, यानी 2 by 10 and Rp comes out to be 10 by 2, it comes out to be 5 ohm, which means हमारे पास अब क्या रह जाएगा हमारे पास, which means now we are left with, ये सारा ख़त्म होने के बाद हमारे पास बच गया 5 और यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 10 है. now again this 5 and this 5, ये दोनों 5 क्या हैं आपस में सीरीज में. what you'll get 10 ohm. यानी अब हमारे पास सर्किट में रह गया 10 ohm और नीचे एक और 10 ohm. So 10 ohm and 10 ohm they are parallel. As you can see हमें AB के क्रॉस निकालना था तो उस ऊपर वाला सब सॉल्व करके आ गया 10 ohm. So 10 ohm and 10 ohm again parallel. What you'll get 5 ohm. So the resistance across AB के क्रॉस जो resistance आ गई हमारी वो कितनी आ गई? 5 ohm. Okay. Now next is we need to find the resistance across AD. Now in this case
AD के क्रॉस रेजिस्टेंस निकालने का मतलब है कि हमने जो एक्सटर्नल बैटरी है वो AD के क्रॉस लगा दी। अगर हमने एक्सटर्नल बैटरी AD के क्रॉस लगा दी, नाउ लेट अस कंसिडर दैट द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम D, तो कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ चला जाएगा, बट द सेम करंट विल फ्लो फ्रॉम BC to BA, which means 10 and 5 are in series. So first you will write 10 ohm plus 5 ohm are in series, so you will get 15 ohm. But that 15 ohm will be parallel to this 10 ohm. So what we'll do, 1 by 15 plus 1 by 10. And a simple formula to find the two resistances in parallel is R1 R2 upon R1 plus R2. So what you'll get, 150 by 25, and you'll get RP as 6. नाउ दिस 6 ओम, यानी बाकी सब कुछ ये इतना इतना ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ओम। अब वो 6 यानी हमारे पास सर्किट कैसा बन जाएगा, 7 6 एंड 3, ये हो गया 7 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो जाएगा 3 ओम। नाउ दिस 7 ओम एंड 6 ओम एज यू कैन सी सेम करंट इज फ्लोइंग, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, तो हमारे पास आ जाएगा 13 ओम। और 13 ओम यानी अब हमारे पास what will do, ये सब भी ख़त्म हो गया और हमारे पास बच गया 13. Now this 3 and 13 ohm, they will be parallel. So what you will do, 1 by RP, यानी सिंपल फॉर्मूला 2 का अगर हम लगाएं तो वो हमारे पास बन जाता है R resistance comes out to be R1 R2, यानी 13 into 3 upon R1 plus R2, 13 plus 3, so 39 by 16, which on solving you will get it as 2.44. So this will be your answer. When you open your books you will see so many questions of resistance in series and parallel. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएंगे. Again I'll give you one assignment based on this resistances in series and parallel. Now we'll discuss the next topic.